Hello student, today in this video we are going to discuss about the steps in the process of organizing. So student, as you know, in our earlier video we have started the chapter about organizing. So here we are going to discuss about the various steps involved in the process of organizing. So student, as you know, organizing means to organize everything to the management, to the business, or to the business entity, like means starting from the raw materials to finance and to human resources. Okay, so and in also organizing we create various authority responsibility relationship. So that's the definition of organizing, and which we already have discussed. But what are the steps involved in the process of organizing, means how one can do the functions of organizing in the management. It is very important. So basically student, in this video we are going to learn about the steps involved in the process of organizing. So as per the syllabus, as per your book, it has been given that there are 5 stages or 5 steps in the process of organizing. The first one is identification of total activities, then grouping and subgrouping of activities, then assigning duties and delegation of authority, then coordination of action. So one by one we'll discuss about each and every steps. Okay, so let's start. So first steps in the process of organizing is to identification of the total activities. See student, in any business organization or in any business firm, there are lots of activities which need to perform. So in the process of organizing, the basic duty or first duty of a manager is to identify the activities which are to be performed in order to accomplish the objective of the business organization, which already set in the planning process. ओके स्टूडेंट, तो हम लोगों ने जो प्लानिंग प्रोसेस में गोल सेट किया था, ऑब्जेक्टिव सेट किया था, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने प्लानिंग किया था कि ओके वी हैव टू डू दिस थिंग्स. बट ऑर्गेनाइजिंग में पहले आइडेंटिफाई क्या करना पड़ेगा कि क्या क्या एक्टिविटीज, व्हाट आर दोज एक्टिविटीज व्हिच वी नीड टू परफॉर्म सो दैट वी कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव्स. ओके, so the manager must identify the total task involved for achieving the objectives. Therefore, the total identified activities are broken down closely related component activities that are to be performed by each individual. Okay, for example, the total activities of an industrial concern may be broadly divided into production, finance, personnel, marketing and purchasing, etc. Okay, so the activities of an institution, for example like say school, may be divided as teaching, library, sports, office administration, extracurricular function, etc. So then the teaching function may further divided into teaching of different subjects like English, social studies, science, etc. तो देखो क्या होता है, लाइक स्कूल में जैसे कि बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं. ओके, तो क्या क्या एक्टिविटीज़ पहले होना चाहिए उसको आइडेंटिफाई करो, एंड देन द एक्टिविटीज़ ऑफ सिमिलर ग्रुप नीड टू बी डिवाइडेड. ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग का. तो इन केस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो वैसे ही होते हैं, जैसे कि बहुत सारा एक्टिविटीज़ होते हैं, उनको एक्टिविटीज़ ऑफ सिमिलर नेचर लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, पर्सनल, विच आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो उसको डिवाइड करना, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंड एक ग्रुप पे डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, तो सेकेंड स्टेप इज, I hope you have understood the first step. The second step is grouping of activities. Okay, as in first step we have discussed that after identification of the activities, means all the activities which we need to perform, the next step is to group them and if necessary then subgroup them. Okay, so the total activities of an organization is divided into major functional activities, and each such functional activity is further subdivided into different jobs. Okay, grouping of activities or divisions of work is essential because the entire work cannot be done by one individual. So grouping activities is carried out to do all work systematically and to facilitate specialization in the organization. Now what does it mean? देखो प्रोडक्ट का जैसे कि एक्टिविटी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो क्या होता है, एक्टिविटीज़ जो है उसको पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, देन उसको ग्रुपिंग किया जाता है, सो दैट ग्रुप इन द सेंस द एक्टिविटीज़ ऑफ सिमिलर नेचर आर ग्रुप्ड. ओके, तो सिमिलर नेचर का एक्टिविटीज़ को ग्रुप करने के बाद, जो कि सपोज मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अलग अलग ग्रुप हो जाते हैं, अब भी क्या होते हैं उसको भी सब ग्रुप किया जाता है. फॉर एग्जांपल कोई पर्सन जो मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है, इट इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ ए मार्केटिंग मैनेजर टू लुक आफ्टर एवरीथिंग, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो वो अपने काम के
मीन्स सिंप्लीफिकेशन के लिए वो क्या करते हैं, फिर से वो जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसको फिर से सब डिवाइड किया जाता है. मान लो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट. क्यों ऐसा किया जाता है? ताकि वो जो वर्क है वो स्पेशलाइजेशन की बेसिस पे हो और सिंप्लीफाई हो सके, एंड सो दैट द वर्क कैन बी परफॉर्म इन ए सिस्टमेटिक मैनर. क्लियर? तो जनरली याद रखना, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ में जनरली कैसे ग्रुपिंग किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन. क्लियर? So this is, and while grouping these activities, one should remember that there should be maximum possible specialization so that the work is performed efficiently. Grouping of tasks should be improved coordination among the departments. ऐसा नहीं होना चाहिए कि there should be a conflict between the departments. No, when the work has been divided and subdivided, there should be a coordination between them. Like in case of marketing department, suppose marketing department is subdivided like market survey section, advertising and publicity section. तो सब ग्रुप जो है like market survey section, advertising and publicity section, उनके बीच में conflict नहीं, coordination रहना चाहिए. ये बात मैनेजर को दिमाग में रखने के बाद ही ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेगा. Okay, then it should minimize the administrative expenditure and time. Okay, जितना भी ग्रुपिंग कर लो, जितना भी डिपार्टमेंट बना लो, always incur or involve lots of cost and expenditure, but इसको भी देखना चाहिए कि it should be minimized, and the number, needs, परफॉर्मेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ एम्प्लॉय शुड बी टेकन इनटू अकाउंट. कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम ग्रुप बना ही रहे हो और एम्प्लॉयज़ भी उतना नहीं है. नो, while considering the number of people involved in the organization, you have to divide the activities. Okay, so this is about the grouping of activities. तो पहला क्या था? identification of total activities. next point क्या है? grouping of activities. group कर दो. ठीक है, उसके बाद क्या point आता है? assigning duties. Okay, तुमने group कर लिया, as a manager you have grouped them, the grouped activities and subdivided the activities. now your next turn is to assign the duties. The various group of activities are allotted to different individuals. While assigning duty activities, their abilities and aptitude should be duly considered. Each person should given a specific job best suited to him, and he should be made responsible for its performance. Now, ये क्या होता है? जो नेक्स्ट स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का इज टू असाइन द ड्यूटीज हु इज़ वेरी कैपेबल ऑफ डूइंग द पर्टिकुलर जॉब. अभी द पर्सन हु इज़ वेरी गुड इन कंप्यूटिंग, सपोज फॉर एग्जांपल ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो यू शुड पुट देम इन टेक्निकल ब्रांच rather than to put him in marketing department. Okay, तो ये बात ध्यान पे रखना होगा while assigning the duties. Okay, पहले क्या होता है? identification of activities, then grouping करो, grouping of the activities of similar nature, and if necessary सब group करो. उसके बाद क्या करना पड़ेगा? assign करो duties. किसको? the person who is very suitable to perform the job. Okay, and he should be made responsible for its performance. There should be a proper match between the job requirements and the capabilities of the people. The duty and responsibility of every individual should be clearly defined and explained to them. This is necessary to avoid duplication of work and misunderstanding. ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जिसको जो काम करने दिया जाता है तो वो that person will be much aware about his duty. So उसमें क्या होता है? Duplication and overlapping of work never happen. It is not possible of happening in such of instances. Okay, क्योंकि the individual to whom you have assigned the duty, he is already well known about his duty, so he will perform this job. Okay, then your next point is delegation of authority. Now this is very very important. You are assigning the job and without giving them power, then it is not possible. The person may not give them his best result, and it is not possible. तो यहाँ पे क्या होता है? These steps involve the creation of authority, responsibility, relations to determine who is the boss and who are his subordinates. क्योंकि after assigning the jobs, उससे के बाद क्या होता है? authority जो होते हैं उसको डेलीगेट किया जाता है और उससे पता चल जाता है कि कौन बॉस है और कौन उसका सबऑर्डिनेट्स है, कौन किसका मानेगा और कौन किसका रूल्स फॉलो करेगा और किसके पास पावर है कि कमांड करने का. क्लियर? देन सी
There should be a clear definition of authority and responsibility associated with each job. In other words, these steps leads to the designing of a structure of various positions arranged in a hierarchy or chain of command from top management level to operative level. Okay, more assignment of work is not enough unless each individual is given authority to perform the task. An individual cannot perform his duty without getting the rights and powers to do it. Okay, the delegation of authority is therefore essential step in the process of organizing. Okay, and the authority can be delegated only when there is a clear cut structure of relationships. तो authority तभी दिया जाता है अगर उस वहाँ पे clear cut structure पता चल जाता है कि okay, these are my subordinates and now I can delegate my authorities. So this is very important step. It is called the delegation of authority. Next step is, which is the last step, which is coordination of action. Now what is coordination? देखो student, the ultimate step is to set coordination mechanism in the organization. This is done to ensure that functions required for a particular purpose are grouped according to their relation to one another. The coordination reduces inefficiency and harmful conflicts between the individual and also the department. So coordination generally क्या होते हैं, is individual of the enterprise working in whatever capacity or in any department or sub-department must need the basic physical raw material, machines, tools, technology and other inputs. Coordination actually क्या होता है? It refers to the job of ensuring that work of one employee contributes rather than conflicts or overlaps of the work of another employees. The essence is very important. मीन्स वहाँ पे अगर कन्फ्लिक्ट ही अराइज हो जाए तो वो पूरा का पूरा जो मैनेजर्स का जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस था वो एवरीथिंग विल बी इन वेन. ओके, तो दिस शुड बी टेकन टू अचीव कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द एंटरप्राइज. ओके, सो कोऑर्डिनेशन लाना बहुत ज़रूरी है और कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है कि वर्क जो एम्प्लॉय है वो लोग उसमें मीन्स टुगेदर दे आर वर्किंग एंड दे आर rather than conflict or overlaps with the work of another employee. So this is all about the various steps in the process of organizing. So see, तो पहले क्या होते हैं, पहले तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टोटल एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर लो. देन ग्रुपिंग एंड सब ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़. उसके बाद वर्क ऑफ सिमिलर नेचर और एक्टिविटीज़ विच आर सिमिलर इन नेचर को ग्रुप कर लो एंड इफ नेसेसरी सब ग्रुप ही कर लो. देन असाइनिंग ड्यूटीज़, एक्टिविटीज़ को जब ग्रुप करने के बाद उसको असाइन करना पड़ेगा पर्टिकुलर पर्सन को. देन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, पावर जो है वाइल की असाइनिंग देम यू हैव टू डेलीगेट द अथॉरिटी, क्योंकि वो जब अपना वर्क परफॉर्म करेंगे उनको पावर भी होना चाहिए उनके पास. देन कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शन, जो जितने भी सारे वर्क हो रहा है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है. ओके, तो दिस इज कॉल्ड these 5 steps are involved in the process of organizing, and I hope you have understood all. So if you have any doubt you can write down in the comment section. So this is for today. In our next video we are going to discuss about the structure of organization. Okay, so thank you student.